Hello and welcome to the Times of India Hangout. I am Vijay Lakshmi Tiwari and today we have with us the gorgeous Elli Avram. Hello Elli and welcome to the Hangout. Hi, thank you so much. Sorry we made you wait for such a long time, but congratulations for your movie. It's doing wonderful at the box office. Yes, thank you so much. What is the reaction so far that you have got from viewers, audience, from the industry? The reactions are amazing. Like seriously, every day I keep getting like messages from people and so many fans. Like I see my Twitter, they're writing such amazing things. It's like I keep on retweeting like पूरा दिन खाली वही करती हूँ, you know. So amazing, great response. I'm very happy. मैं बहुत खुश हूँ. Like seriously, yeah, it's a great feeling. I mean, yeah. Ellie, there were reports that even Badshah Shah Rukh Khan saw the movie. So, what was his reaction? Did you receive any special compliment from him? Actually, I was not there on that screening when Shah Rukh sir was watching it. So, but I mean, we heard from Kapil and from Varun Sharma. They were telling us that that they were talking very nice about the movie and about all of us and my songs and also yeah. So Okay, great. And you worked with Kapil Sharma. He's very popular with the masses, with the classes. Everyone just love him, adores him. How was your experience working with him? My experience working with Kapil was amazing. Seriously, he is a super funny guy. Actually, like all the time on the set, we were like laughing and having such a great time. You know, हमको पता नहीं चला कि already we have shot the entire movie. So it was great fun and Kapil भी बहुत supportive थे. Like he was really supporting a lot. जैसे मेरी हिंदी है तो कभी कभी शायद कुछ ऐसा शब्द था जो मैं एकदम नहीं समझ गई कि इसका मतलब क्या है या जो भी. So he was very supportive and also उनका उनका स्पीड जो है ना जब वो डायलॉग्स डिलीवर करते हैं सो ही स्पीक्स वेरी फास्ट एंड ही इज वेरी स्पॉन्टेनियस. वो बहुत स्पॉन्टेनियस है तो और उनके जोक्स समझने के लिए तो मतलब मैं अपने आप को बहुत अलर्ट रखना पड़ता था which was a great experience for me because it makes you become more क्या बोलते हैं like it's very good especially अगर आप कॉमेडी भी करते हो ना so you have to be in the speed. You cannot lose it क्योंकि then the entire scene will lose its charm. So I really learned that with Kapil. So मुझे ये बहुत अच्छा लगा and yeah, like it was great fun actually. I will really miss it. Okay. Talking about comedy, how difficult it was. People say that comedy is the most difficult genre. So how difficult it was for you, especially you were doing it for the first time. Um, Actually, mere dialogues are not like very much in comedy. It's more like my co-stars like Kapil Sharma या मनोज जोशी सर जो मेरे डैड का रोल प्ले कर रहे हैं मूवी में. So जैसे मैंने कहा, the thing with comedy is that it's very fast. You can't do it slowly and you have to catch it. Especially when your co-stars are so good in improvising, you have to keep yourself so alert. जैसे मैंने कहा, you have to be alert and understand कि oh my god, अभी कपिल ने या मनोज जोशी सर कुछ ऐड किया है, तो I have to catch it. So that was a great learning for me. मुझे बहुत अच्छा लगा ये. And also the thing in comedy वो भी है कि फॉर एग्जाम्पल शायद कपिल कुछ ऐसा डायलॉग बोलेंगे जो एक्चुअली फनी है but my mood has to be maybe serious, so you have to hold yourself. You can't laugh suddenly because it's sounding so funny. Yeah. So that is also a very tough thing. You have to hold yourself in your own mood. So yeah, but it was good fun. Any prank, any mischief that Kapil did to you during the making of the shoot, and you would want to share with the audience? नहीं, he didn't do anything as such. लेकिन मुझे याद है जब हमारा एक ये
जैसे रोमांटिक सीन है हमारा, तो सडनली एक्शन के पहले कपिल एक्टिंग कर रहे थे जैसे शाहरुख खान की तरह. Suddenly he started to do all that, and I'm starting to laugh. and कपिल अब क्या कर रहे हो, क्योंकि मेरा मेरा मूड बहुत सीरियस, I had to have a very serious mood that time. And then he just said अच्छा चलो ठीक है, हाँ, I won't do it. And then action के पहले he started, वो funny faces बनाते थे, and camera is going, but camera is on couple face in the beginning, and I'm sitting and I'm trying to come back to my mood, because I don't want suddenly the scene to get cut just because I'm laughing. So but that was good fun, seriously. So he's very funny couple. Talking about there are Kis Kis Ko Pyar Karu, there are four heroines including you. So we have heard so many stories about cat fights and people, especially heroines, don't get along well with each other. In this film there were four heroines. तो ऐसा कोई लड़ाई हुई या people want to know कि ऐसा कोई तनाव था set पे? How was the atmosphere on the set? Well, I have some bad news for the people then. We are four wonderful girls who really had a great time together. Like, seriously, touch wood. We have had a lot of fun. Like, shooting के बाद हम bowling के लिए गई थी, खाने के लिए गई थी. Like, we have a lot of fun together. Actually, मेरे scenes बहुत नहीं है दूसरी लड़कियों के साथ, लेकिन जितने भी है हमें बहुत मतलब enjoy किया साथ में. So touch wood, we are like four girls who have really bounded very nicely together. So no, sorry guys, we haven't had any cat fights या कुछ ऐसा नहीं. So no. Who do you really bonded well with amongst the four, amongst the three heroines? All of them. Like, we all used to be together. Like, sometimes we used to sit in Simran's vanity van, or sometimes we used to be in Sai's vanity van, or sometimes in mine or in Manjari's. So we all have been, हम सब जैसे एक family की तरह हैं. So it hasn't been really like we are more closer, we are more closer. We are all like a big family. So that has been the amazing thing. अगर like shoot पर तो मेरी एक friend who आई थी, and she was also saying कि wow, it really feels कि you guys are like a family, कि इतना positive energy है यहाँ set पर. So and that is how it actually was. So we all have really bonded nicely together. Great news for fans who love Elli, who love watching her. Elli, you made your debut with debutant Manish Paul with Mickey Virus. Again, the second movie you're doing with the debutant Kapil Sharma. Do you think you are lucky for debutants? I don't know actually. ये तो मुझे पता नहीं. No idea. Third film में आप किसको launch करना चाहते हो? हाँ? Third film को launch करना चाहती हो? launch करना चाहते हो? वाह, मुझे तो पता नहीं कि कौन है, मतलब जो अभी उनका launch हो रहा है. I don't know. I have to search. बाद में बताऊंगी आपको. But do you feel any kind of pressure, because जब आप एक established actor के साथ industry में काम करते हो, there is a easiness when you're doing a film with an established actor. But जब आप एक debutant के साथ काम कर रहे हो, there is a pressure. So कोई pressure था आपके पास दोनों फिल्मों की बात करें तो? Pressure जैसे? When you're doing a film with a debutant, there is a pressure because वो भी नया है, आप भी नए हो. But when you're doing a film with an established actor, उसकी पहले से fan following रहती है, he is more established in the industry, people know him. When you're working with a bigger star. नहीं, I don't have any pressure. I don't think as such in those lines, मैंने कभी ऐसा सोचा नहीं. You started off your career with Mickey Virus, but people saw you on TV, on Bigg Boss. So looking back at your career, do you think doing Bigg Boss was a mistake, or it has been not at all. Bigg Boss has been a great thing for me, and I'm truly grateful for
the Big Boss people, the team, to putting me in the show. And of course, I'm very grateful for to Salman, who supported me so beautifully, and it truly, like, yeah, it was like a blessing for me, because it is a fact that I got my fame from Big Boss more than from my movie. And I mean, वो तो साथ में था, like Mickey Virus released when I was in Big Boss. So yeah, Big Boss was truly a blessing, and it was really a life experience. So मुझे बहुत अच्छा लगा. So yeah. Experience in Big Boss house, people got to see you the real Elli Avram for the first time, and also you are the one of the most positive people in the house. So when we are talking about Big Boss, you got quite emotional during the your stay in the Big Boss house. So were you somewhere unprepared for what you were getting into? Yes, I was actually I got completely shocked, क्योंकि मुझे याद है कि मेरे मैनेजर्स ने मुझे कहा कि बिग बॉस इट विल बी लाइक यू विल स्टे लाइक इन जैसे एक फाइव स्टार होटल की तरह, एंड इट विल बी नाइस चिल्लाना. तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है, हाँ कर सकते हो. और उसी टाइम पे तो दे हैड दिस वो अलग एक थीम था ना, पहली बार है जो क्या है कि जन्नत और जहन्नुम है. हाँ. So, जब मैं एंटर किया ना, आई वाज लाइक ये क्या है. Like the first thing I thought, I'm like, when I meet my manager ना, तब मैं बोलो. you know so लेकिन मुझे मजा आया. I actually enjoyed it, and to be honest, I remember that I loved Jahannam more than Jannat. Like I really remember that कि मुझे बहुत अच्छा लगा. Like it was such a fun, great experience. We were living so simple and all. But to be honest, like ये सब tasks जो हर हफ्ते चल रहा था ना, I was not aware of that. ये मुझे actually नहीं पता था कि ऐसे होता है बिग बॉस के अंदर these crazy tasks. तो इसलिए हर हफ्ता I was like always the worst performer. इसलिए सब लोग हर बार मुझे क्या बोलते हैं, they were always voting for me ना कि worst performance कौन था, एली. And I was like चलो ठीक है, vote for me. मैं ये सब चीज नहीं करूंगी seriously. I won't go this maddening things जो था, नहीं कर सकती हूँ ये. So yeah. Who according to you was the most positive person in the house and who kept pushing you, and you thought जब ये रह सकता है तो मैं क्यों नहीं रह सकती. Who was the most positive person? I think that would have been Sanramji. Yeah, because he was very this positive and all, and he was also very supportive to me. In the beginning, har baar he was, yeah, like he was positive. Yeah. Ellie, will take few of your contestants' name who shared the platform with you on Big Boss 7, and we want you to describe them. What comes to your mind first? I just have come out from Big Boss house. उसी टाइम पे हम ये सब कर रहे थे. Okay, so first is Gohar Khan. Strong. I have to say only one word, yeah? No, you can explain. Yeah, I would say strong. She's a very strong girl, and very focused, and क्या बोलते हैं? Like if she wants something, she will get it done. So strong-minded. Huh. Strong-minded. Yeah, that's an English Tanisha. word, I hope, because I tend to invent my own English words. Tanisha. Tanisha, sweet and very like sweet. Yeah, sweet, I would say. Kushal. Bada bacha. I used to call him that. Why? Because he's like a bada bacha. Okay. Arman Kohli. Um,
sweet by heart and with high temperament sometimes that can go a little bit beyond, but he's very sweet by heart. Andy. Andy is like my best buddy. I love him. Full on entertainer, positive, lots of energy, and yeah, super funny. I love him. Love you, Andu. Okay. Pratyusha. Pratyusha. Um, also like very young, um, sweet girl, and I didn't have so much of relationship with him in the show, with her in the show, so I can't really describe her so much. But yeah, a sweet young girl who I'm sure she will क्या बोलते हैं, धीरे धीरे she will also become more mature and more wise. When we are talking about Big Boss, Salman Khan comes obviously, he's synonymous with the show. How intimidating he is as the host of Big Boss. क्या क्या How intimidating he is. उनकी personality कैसी है? क्या उनको देख के डर लगता है? डर लगता है उनको देख के? मैं आपको पूछ रही हूँ, क्या उनको देख के डर लगता है? Does he comes across that kind of person? No. Why? नहीं. I mean, how is he as the host of Big Boss? I think he's superb as a host. I mean, एक बहुत मुश्किल काम है actually, और मुझे याद है कि बहुत बहुत बार ऐसा था कि उनको अच्छा नहीं लगा because sometimes अगर वो कुछ बोलेगा तो suddenly हमारा सबका अलग अलग फैंस है ना, so everyone will attack and this and that, तो उनको अच्छा नहीं लगता है ना, वो खाली उनका काम करते हैं शो पर and he has to say opinions or comment on different kind of things and all like that. So but I feel he's doing a great job and truly also entertaining. So yeah, I mean it is a tough job. Imagine yourself if you are standing there and you have to speak about कि क्या हुआ हफ्ते में and आपने ऐसा बोला, आपने ऐसा क्यों बोला, और ये सब and then we all have our own fans ना, so and fans हर बार उनका स्टार को support करना है ना, and wants to be with protect them. Exactly. So it's like, and we can't make everyone happy ना, जितना हमको भी चाहिए कि सब लोग खुश रहना है, कैसे करेंगे? So you have worked both in Swedish film industry and now you're working in Bollywood. What is the one difference that you have come across and how has been your journey from the first film? Time. Time. स्वीडन में ऐसी है कि जितने बड़े स्टार आप भी हो ना, अगर 8 बजे आप सेट पर होना चाहिए तो शार्प 8 बजे आप सेट पर होना चाहिए. मुझे याद है एक बार जब मैं एक शूटिंग कर रहे थे तो एक एक्टर है जो काफी बड़े हैं स्वीडन में, तो वो थोड़ा सा लेट थे, मतलब वो 8:15 पहुंच गए सेट पर एंड द डायरेक्टर वाज फ्यूरियस, मतलब really फ्यूरियस, लाइक ये नहीं चलता है वहां पे. इट्स लाइक 8 बजे शुरू करना है तो सब लोग 8 बजे सेट पर होना चाहिए, स्टार्ट करना है एक्शन. So it's very like strict with timings and all, and everything is completely proper, like every single little thing. So that is the difference, I would say. यहाँ पे तो थोड़ा सा अलग है. So yeah. So you enjoy that or you crib कि ऐसा change आना चाहिए? नहीं, मैं तो बॉलीवुड प्रेफर करती हूँ ना, तो जैसे यहाँ पे चलता है चलो ठीक है, ऐसे ही चलता है. So yeah.
There were reports that you welcome Ganpati Bappa at home. You are also a trained Kathak dancer. So, what inclines you towards Indian traditional and culture? What? क्या? Inclines you towards Indian tradition and culture? वो क्या मतलब है? Like you are a trained Kathak dancer. There were reports. I have to say I'm not a trained Kathak dancer. I have danced, I have learned basics in Kathaks and all, but I'm not a trained like professional Kathak dancer. So what do you love about like Indian that. culture? क्या? If you want to say, what do you love about Indian culture? What I love about the Indian culture. What I love about the Indian culture is that, especially, the first thing I truly love is the respect for family. I think it's so beautiful. इंडिया में ये जो है कि अपने घर वाले आपके साथ रह रहे हैं and you really have that thing कि you take care of your parents and whole this entire respect एक चीज़ है जो मुझे बहुत अच्छा लगता है is this thing जब आप um, पैर टच करते हो I think it's so beautiful and the whole family atmosphere, the whole family kind of thing is so beautiful. This ये सब festivals जो भी होते हैं, it's so amazing. India is actually the country with the most festivals. And I think it's so beautiful. ये सब festivals एकदम ऐसे कलरफुल है, warm है, बहुत प्यार है ये festivals में, and it's just so beautiful. So I just love that. I love this the real Indian culture type. वो ही है जो मुझे बहुत अच्छा लगता है, and I really pray कि that won't get faded away because I think it's something very unique and something very, very beautiful. So yeah. One thing about India that you can't resist. One thing about India that I can't resist. Indian food. Indian khana, Indian kapde bhi. I love What do it. you love in Indian food? Huh? Which is your most favorite dish? My favorite dish, बहुत है actually. I love dal makhani. I love butter chicken. आलू पराठा मुझे बहुत अच्छा लगता है. It's super yummy. And so many Indian खाने में बहुत सारे options है. And I love all of it actually. So yeah, I think it's super yummy. Okay. We have also got some questions from your fans. Shri wants to know, Ellie, if you are given a chance to do a show like Bigg Boss again, hosted by Salman Khan, will you do it? And what will we see different this time? I think I wouldn't mind to enter as a guest or something. एक हफ्ते के लिए कुछ. And if I would do that, then I think I would do a lot of मस्ती क्योंकि अभी so अभी तो बहुत मस्ती कर सकती हूँ. But I must still be myself. So, but yeah, I think I would just joke more with people and all. Yeah, like that. Okay. So Hail Raza tells you that you were awesome and you rocked in Kiss Kiss Ko Pyar Karu. Yay, But thank you. but he would like to see you in a thriller movie. Will you do it anytime soon? In a thriller movie, of course, if there's a script that I truly like and feel कि हाँ ये script मुझे करना है और मेरा role जो है मुझे अच्छा लगता है, so yes, of course I would do that. Prateek Agrawal, you have a great body. You have lost a lot of weight from your first movie. Will you flaunt a bikini on screen? अगर कुछ ऐसा रोल मिलेगा जो मतलब it's required to have it, to wear a bikini or something, yes, why not? I don't see any bad thing in that. Ravi tells you, from what you would remember, how was Ellie like a child with her friends, and has she changed?
Well, मुझे पता नहीं if I have changed or not. ये तो अपने घर वाले को पूछना है. But how was I as a child? I used to be very. I used to be like a tomboy actually. I used to be really like a guy. I used to wear these more like tough kind of clothes. Actually, जब मैं बहुत छोटी थी ना, तो I used to wear my brother's पुराने कपड़े. So, and yeah, I used to be very like cool, and I used to play like American football मेरे भाई के साथ या uncle के साथ, and very much like that boyish and all. So yeah, and later in my teenage, I started to come into that girly kind of zone, again. So I've always been like a mix actually of girly and boyish. Like I have both side of me. Like जब मैं girly हूँ तो मैं एकदम girly हूँ, और जब मैं boyish हूँ तो मैं एकदम ऐसी मतलब boyish हूँ. So yeah, I used to be like that, and actually, one thing I know for sure that I've always had since मतलब बचपन से, I've been always very stubborn. Like very very stubborn. If I want to have something, I have to have it. It's like nahi. But I think I've started to become better now. The more I'm growing up. Yeah, my next question was, has it changed or it's still there? I think it has become lesser, but it's still there for sure. It's still there. जैसे किसी को प्यार करूँ मैं, तो मेरा कैरेक्टर भी ऐसा है कि वो एक जिद्दी लड़की है. So that was quite similar to my real to how I am in real life. So yeah, I think that's still there, but I'm trying to become more like chalo theek hai, okay, chalo, yeah. So Arun wants to know, you are a foreigner, but you have nicely fit into the Indian style of life. If you have a chance to work in Hollywood, would you pick up a project? बॉलीवुड है जो एक्चुअली मेरी प्यार है, और मैं बॉलीवुड में काम करना चाहती हूँ. हॉलीवुड के बारे में मैंने कभी सोचा नहीं एक्चुअली इतना सा. If something would come up that would maybe be something super funny or interesting, तो yeah, maybe I would do it, but I would anytime prefer Bollywood. I mean, मैं उम्मीद करती हूँ कि मैं बॉलीवुड में खाली बॉलीवुड में projects मिलेंगी, so I will be busy in Bollywood. So because Bollywood is what I love and I only want to work here, to be honest. मुझे लगता है हॉलीवुड खाली होगा अगर ऐसा है कि यहाँ पर कुछ स्क्रिप्ट नहीं मिलेगा और टाइम फ्री है, तो हाँ कर सकती हूँ. Okay. Suhas wants to know, what is your first memory of Salman Khan when you saw him for the first time, and what was your reaction? My first memory है जब मैंने सलमान को पहली बार देखा. वो एक्चुअली सेट पर थी, मतलब मेरा एंट्रेंस था बिग बॉस में, तो वो स्टेज पर आई थी एंड ही वाज हैविंग अ टूथपिक इन हिज माउथ. वो मुझे याद है. सो आई रिमेम्बर दैट. एंड और अगला सवाल क्या था? What did you thought about him, when you saw him for the first time? I actually, वो जो मुझे याद है, I noticed this thing जो बहुत लोग मुझे कह रहे थे कि सलमान का ऑरा जो है वो इतना बड़ा और पावरफुल है. इट्स लाइक अमेजिंग. मतलब बहुत लोग ऐसे कह रहे थे हर बार. तो मैंने सोचा कि मतलब ये ओके इंटरेस्टिंग, कि क्योंकि मैंने कभी कुछ ऐसा एक्सपीरियंस नहीं किया. मैंने कभी कोई इंसान देखा नहीं जो ये has a strong powerful aura and all. And I truly believe in those things. And I remember actually जब वो स्टेज पर आई थी, जब मैं उनको पहली बार देखा, तो मुझे ये लगा कि he really has that that aura that is really like it's just amazing. Like you really become Larger than life. powerful. बहुत powerful है, powerful or positive. So yeah, I truly remember कि I was like, अच्छा अभी मैं समझ गई. Okay.
Priya wants to know that your link up story, if there are any. That my what? How do you react to link up stories if there are any? How do I react to link up stories? Yes. Uh, well, I have got quite used to them right now. Um, it's, I mean, क्या कर सकते हैं? You know, you just have to ignore it. मतलब, you just have to laugh. Actually, to be honest, like जैसे मैंने एक इंटरव्यू किया, एक रेडियो इंटरव्यू किया, तो वो तो वो मुझे पूछ रहे थे कुछ ऐसी कि हाउ डू यू टेक दिस जब मीडिया ये कंट्रोवर्सीज दिखाते हैं या जो भी तो मैंने खाली बोला कि मुझे तो मतलब मैं तो एकदम एंजॉय करती हूँ क्योंकि मीडिया लोग ना वो हमको एक्चुअली एंटरटेन करते हैं लाइक सीरियसली दे कीप ऑन मेकिंग वो बनाते रहते हैं और हमको एंटरटेन करते हैं इट्स लाइक अच्छा सीरियसली आई एम डेटिंग हिम क्या बात है यार और या ओ ऐसा हुआ अच्छा मैंने ऐसा कहा ओ वाओ सो इट्स एंटरटेनिंग एक्चुअली हमको एंटरटेन करते हैं सो हम तो खाली एंजॉय करना है खुश रहना है एंड या सो या एक्चुअली आई जस्ट या क्योंकि जितना जितना अगर हम फॉर एग्जांपल ऐसे रिएक्ट करेंगे कि नहीं हम अभी एक्सप्लेन करेंगे कि ऐसा नहीं है ये सच है ये गलत है जितना हम ऐसे एक्सप्लेन करेंगे ना इट्स जस्ट गोना बी वेस्ट ऑफ टाइम क्योंकि पीपल हु थिंक इन वन वे दे विल ऑलवेज थिंकिंग दैट वे कि नहीं ऐसा है वो झूठ बोल रहे हैं अरे वो खाली एक्टिंग करते हैं हमको पता है कैसा है हाँ क्योंकि वो कमरे के अंदर में थे ना तो उनको पता है ना समझे सो इट्स लाइक there's no point of wasting your time trying to convince people and all like that आपको पता है कि आप कैसे हो आप कौन हो आप क्या करते हो so खाली खुश रहो हम थोड़ा सा हिंदी की बात करेंगे अपने नवभारत टाइम्स के रीडर्स के लिए सॉरी तो आप जानना चाहे हम थोड़ा सा हिंदी में भी ज्यादा बात करेंगे हमारे नवभारत टाइम्स के रीडर्स के लिए तो मेरा अगला सवाल आपसे हिंदी में है कि बिग बॉस में आपके कौन कौन से दोस्त बने और आप किन लोगों के साथ अभी भी कांटेक्ट में हैं एंडी एंडी तो मेरा बेस्ट फ्रेंड है सीरियसली बिग बॉस है हम तो बहुत मतलब चिल मरते हैं पिक्चर देखने के लिए जाते हैं साथ में we are always like chilling and having fun together so Andy is truly Andy तो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है बिग बॉस के बाद so जो मैं ऐसे बोल सकती हूँ कि रोज हम एक दूसरे को कॉल करते हैं या मैसेज करते हैं so अगला सवाल है कि कपिल के साथ आपकी केमिस्ट्री बहुत अच्छी लग रही है फिल्म में किस किस को प्यार करूं मैं तो देखा जाए तो शूटिंग के दौरान क्या कपिल ने आपको हिंदी सिखाने में मदद की या आपने उनको इंग्लिश सिखाने में मदद की एक्चुअली पहला सीन जो मैं और कपिल ने शूट किया है तो कपिल ने कहा कि एली मुझे इंग्लिश सीखना है तो वो कह रहे थे कि हम खाली इंग्लिश में बात करना है ठीक है तो मैंने कपिल को कहा कि हाँ लेकिन मुझे हिंदी सीखना है तो हम एक काम करेंगे ना कि आप इंग्लिश में बात करो मेरे साथ और मैं आपके साथ हिंदी में बात करूंगी तो हमारे ये चलता था कि कपिल ने इंग्लिश में बात कर रहे थे मेरे साथ और मैं उनका जवाब हिंदी में देती थी सो या इट वाज लाइक दैट अच्छा अगर आपको एक दिन के लिए बिग बॉस बना दिया जाए तो आप क्या क्या करेंगी अगर आपको एक दिन के लिए बिग बॉस बना दिया जाए बिग बॉस के घर का तो आप ऐसी कौन कौन सी चीजें करेंगी अपने मजे के लिए या क्या क्या करेंगी आप अगर मैं जाऊंगी बिग बॉस के अंदर एक दिन के लिए और आप बिग बॉस रहेंगी मैं बिग बॉस वो आदमी जो है जी अगर आपको बना दिया जाए एक दिन के लिए बिग बॉस इफ यू आर मेड अ बिग बॉस फॉर वन डे व्हाट विल यू डू
पता नहीं मैं क्या करूंगी, नो आइडिया एक्चुअली, मैं इतना क्रिएटिव नहीं हूँ ये सब चीज के लिए। मैं खाली गाना बजाऊंगी और लोगों को बोलूंगी कि चलो नाचो, खुश रहो, एंजॉय करो, थोड़ा सा मस्ती भी करो ना, ये सब नेगेटिव बातें बातें बिचिंग करते हैं ये सब छोड़ दो ना, एंजॉय करो थोड़ा सा लाइफ में भी। तो बेसिकली आप उनको पनिश करेंगी जो जो लोग बैक बिचिंग करेंगे? हाँ, आप बेसिकली उन लोगों को पनिश करोगे अगर आप बिग बॉस बनोगे जो लोग बिचिंग करेंगे? पनिश नहीं करूंगी मुझे, क्योंकि इससे कुछ फर्क नहीं होगा, इससे तो ये लोग ज्यादा बिचिंग भी करेंगे क्योंकि टाइम मिलेगा और ज्यादा बिचिंग के लिए। तो मैं खाली उनको वहां पर बैठूंगी ना और खाली ये करूंगी कि वो बिचिंग जो वो करते हैं ना दूसरे इंसान के बारे में, खाली वो मतलब मैं ऐसी शो करूंगी कि अच्छा वो ऐसी आपके बारे में कह रहे हैं और आप ऐसी इनके बारे में कह रहे हो, ये सब तो मतलब अभी खाली क्लियर करो कि प्रॉब्लम क्या है, खाली ये करूंगी और आइसक्रीम दे दूंगी। हाउ क्यूट। अच्छा, आप कौन कौन से बॉलीवुड एक्टर्स के साथ आगे जाकर काम करना चाहती हैं? आपका विश लिस्ट में कौन कौन है? एक्टर्स, ओ यस। वो तो बहुत है। एक तो सलमान खान है जो हम सबको पता है एंड ऑल्सो आई वुड लव टू वर्क विद टाइगर श्रॉफ, वरुण धवन, सूरज पंचोली, so many of them actually, क्योंकि सब एक्टर एकदम यूनिक है, you know, and अक्षय कुमार, so many of them that I would love to work with. आपके आने वाले फ्यूचर प्रोजेक्ट्स क्या क्या हैं? Secret, अभी तक कुछ नहीं बोल सकती हूँ। क्या हम आपको फिर से टीवी पर काम करता देख सकते हैं और किस तरह के शो आप करना चाहेंगे टीवी पे? ये तो मुझे पता नहीं, अगर कुछ ऐसा कोई इंटरेस्टिंग ऑफर मिलेगा जो मुझे अच्छा लगता है कि हाँ ये तो मुझे करना है तो करूंगी, जरूर करूंगी। लेकिन अभी तो कुछ ऐसा ऑफर नहीं आया और मेरा टाइम भी नहीं है अभी। लेकिन देखते हैं फ्यूचर के लिए, तो मैं ऐसी नहीं हूँ कि मैं नहीं बोलते हैं कि मैं मतलब नहीं बोलती हूँ कि नहीं 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 ये सब मुझे नहीं करना है, नो, जो भी आते हैं जो मुझे मतलब जो दिल में अच्छा लगता है कि हाँ मुझे ये करना है, ये मैं मतलब मैं करूंगी, बिकॉज आई ओनली वांट टू डू समथिंग दैट यू नो आई वुड लव टू डू एंड दैट्स इट। और मेरे लिए कुछ ऐसा नहीं है कि जैसे बहुत लोग कहते हैं कि एक स्ट्रैटेजी होता है कि खाली ऐसे करना है, ये आई डोंट बिलीव इन दोस थिंग्स, कोई स्ट्रैटेजी नहीं है। You just have to follow your heart and do whatever you love to do. Any advice that you want to give to the upcoming Big Boss contestants? Yes, be real, be honest, and be yourself. Otherwise, आप शायद कुछ ऐसा करेंगे जो आप बाद में रिग्रेट करेंगे, तो बेटर है कि you be yourself, you be the person you are, and instead of you know acting smart and this and that, और शायद बाद में आपको बुरा लगेगा कि यार मैं ऐसे नहीं हूँ actually or something, but then you know people have got to see you like that, so लोगों का thinking ऐसे होगा ना कि वो ऐसे ही है, so I would advise that, but it depends, you know, शायद आप you know you want to play a game or something, but make it clear then to the audience also कि मैं खाली खेल रही हूँ, so yeah, enjoy करो बस। Thank you so much, Elli. We have a mug lying there. Please sign for your fans, and thank you so much for talking to us. Thank you also, and please watch किस किस को प्यार करूँ। Yes, definitely. Please sign the mug. There is the mug lying there. हाँ? The mug there. You can see. Please sign that. हाँ. I'll sign on this one. Yes.
Thank you, Elli. We had a wonderful time chatting with you. थैंक यू सो मच, मुझे भी बहुत अच्छा लगा और मैं उम्मीद करती हूँ कि अपना सब फैंस एंजॉय करेंगे जब वो ये सब सुनेंगे. Thank you. ओके बाय. खुश रहो और एंजॉय करो. और क्या